I'm a faculty for political science. Along with Shubhra ma'am, I'll be taking classes of Indian government and politics section. So the syllabus that has been given to you, uh, you are aware about the political science syllabus, okay? So in this syllabus, there are 4 sections, right? Paper 1 section A, paper 1 section B, similarly 2 sections of paper 2. So in this syllabus, I will be taking paper 1 section B, that is Indian government and politics, and the first 3 topics of paper 2 section A, that is the comparative politics. Okay? Indian government and politics, that is paper 1 section B, and comparative politics, which is paper 2 section A, first 3 topics. Okay, and then ma'am would be taking the rest of the topics that you can see now. Now before we start the session, particularly for the political science and international relation, the purpose of the session is to go into the nuances of the syllabus, understand the syllabus and the structure of this course, that in the next 7 to 8 months, what is the way in which we are going to conduct the classes, what would be the strategy of doubt sessions and all. Okay, we'll discuss that. But before that, we have our GS teachers with us. Okay, they will be taking some 20-25 minutes of your time to discuss with you the GS strategy, and then I and ma'am will follow up with the PSIR option, and then we'll be open up to the questions that you will ask, so that we can clear all the doubts that you are having. Okay, so we have Akhilesh sir with us. He is the faculty of environment and geography in general studies, so he will address with me. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. My name is Akhilesh, and here I am faculty of geography and environment. So, as our batches are going to start, so it is time to get introduced with you people. So, how we are going to discuss this geography as a GS and how to overcome this topic, because it is going to have a quite impactful subject in your prelims as well as mains examination. Every year, if we talk about prelims, you happen to have 15 question out of 100 is from geography, and in mains examination in paper 1 as well as disaster management part, and this is also going to play a very fundamental aspect of environment and ecology. So it is inevitable, without going through it, this examination cannot be cracked. So it has an immense importance. So how we are going to simplify this geography for you? So with example, I would like to tell you, suppose that they are putting you in a problem, and basically UPSC used to ask very simple question, and that is based on a certain concept. You must have the clarity of the concept, isn't it? If I put this globe in front of you and I ask one question to all of you, how to start this? Okay, suppose that if I, everyone knowing rotation of earth, everyone is knowing that. I'm just asking one question on rotation, बताओगे? ठीक है. So consider the following statement. Consider the following statement regarding rotation. A, earth rotates from west to east. B, earth rotates from west to east in clockwise direction, with respect to south pole.
South Pole. Two statements are there. Okay, two more statements. See, Earth rotates from west to east, in clockwise direction with respect to North Pole, and D, Earth rotates from east to west in anti-clockwise direction with respect to North Pole. Which of the following statement is correct? Is correct एक ही ढूंढना है, एक से ज्यादा है, फिर भी ज्यादा करेक्ट कौन सा है, ये सवाल आपके लिए। ऑप्शन, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू साउथ पोल। इज इट राइट? बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं बताएं। हाँ, दो ऑप्शन तो है ही नहीं, एक ही चुनना है सर। हाउ मेनी ऑफ यू गो विद बी? रेज योर हैंड। 1 2 3। यू ऑल्सो? पक्का नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे? ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू गो फॉर ए? 1। Okay, fine. So here you will find the B is the right answer. Earth rotate from west to east in clockwise direction with respect to south pole. ठीक है, ध्यान से देखो, this is west, this is east. Okay, so rotation with respect to north pole is what? बताओ, it is anti-clockwise direction. But what about now you are watching from south pole? Same. This is a kind of intricacy they can put in front of you in form of challenge. Very simple question on rotation, and most of you is having what? Earth rotate from west to east. This is what the right answer. It should be right answer, but more right is what? With respect to north pole. It is anti-clockwise direction with respect to north pole. Any rotation we are taking with respect to north pole, whether it is clockwise or anti-clockwise. But frame of reference अगर लिखा हुआ है तो वो ज्यादा correct option होगा. So the frame of reference is south pole, so it is what? Clockwise direction. So entire universe has a rotation which has been taken from north pole. Is it fine? So the right answer for this very question is option B. Is it fine? क्योंकि frame of reference के साथ statement दिया हुआ है. And very simple question can be a kind of havoc in UPSC. Like एक और छोटा सा सवाल दे लूं मैम, समय है तो? अच्छा, चलिए आइए बात करते हैं। वो साइंस वाले बच्चे जिन्होंने HC वर्मा की वेक्टर एनालिसिस की है वो भी इन्वॉल्व होकर सुनिएगा। सो अ पर्सन मिस्टर एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए and he covered almost 400 kilometer due west and he reached at point B 400 kilometer, and after he turned towards his right and he covered almost 300 kilometer and he reached a point that is what? North pole. Okay, North pole याद रखिएगा। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, what is distance traveled? 700 kilometer. Very good. And what is displacement? बहुत अच्छे, कैसे बताया आपने? पाइथागोरस या बोधायन पाइथागोरस? कहना शुरू कीजिए, इट्स बोधायन हु गेव दिस, बाद में पाइथागोरस, बोधायन पाइथागोरस 500। लेकिन यूपीएससी इसके आगे पूछेगी, वो कहेगी नाउ मिस्टर एक्स टर्न टुवर्ड्स राइट
more right, and he started walking. In which direction he is moving? Answer is A, due east, B, due northeast, C, due west, and D, none of the above. At point C, which is North Pole also, he turned towards his right and start walking. In which direction he is moving? Huh? East. Well, कितने लोगों को ईस्ट लग रहा है भाई? उठाओ हाथ, क्या पता सही हो जाए. अच्छा, कितने लोगों को नॉर्थ ईस्ट लग रहा है? कितने लोग सही पहुंच पाए कि नन ऑफ द अबव? You have the idea, none of the above. Why none of the above? Let me travel Mr. X. Here A, 400 kilometer, B, then 300 kilometer at North Pole. Now this man is moving either forward or backward, left, right, or any way. He is moving in a direction which is going to be south. So only one direction is possible at North Pole, and that is what? South. On South Pole it is only north. तो either वो आगे जाए तो भी वो साउथ में ही जा रहा है, दाहिने जाए बाएं जाए पीछे आए तो भी वो किधर जा रहा है? साउथ में जा रहा है. तो आंसर क्या होगा? Due south, and it is not given, hence none of them. So these are the very small things which UPSC may ask to you in order to qualify this your prelims examination. और कभी कभी ये छोटे छोटे सवाल इतने कठिन हो जाते हैं कि आप गलतियां कर जाते हैं, और इन सारी गलतियों को आप ना करें इसके लिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी आर गोइंग टू एक्सफोलिएट दिस सब्जेक्ट in front of you by treating all these complex topic in a very lucid way, in a simple way. So ma'am आएंगी and she will join to you. Thank you very much. So good afternoon all of you, and welcome to the session. And as you know that very recently we have shifted from our old premise to this premise, and this is the time when officially our first batch starts. Fine, because in a way, like up till now whatever batches were going on, we were transitioning from here to here. Fine. So as you will be our first batch in a pure sense starting from here itself, and the idea, like why we have shifted, what is the idea behind, is that what I perceive, what I believe is that UPSC exam is turning difficult day by day, and the reason is quite well known. It's not about the paper, but it is more about the number of students who are appearing and who are going to appear in the exam. You all must be aware of the economic situation around the world. Fine. And the economic situation, like the budget this year, there has been a prediction that there will be a slowdown in India's economy. And around the world, as the global markets are going to be closed and tougher, there are going to be very less options available within India and even outside, even for the most talented persons today. And civil services
always because of the job security, because of the social status, and many other things, will be the most preferred option of large number of such aspirants also, which are already quite well placed. This means the competition is going to become tougher. In the past few years, the data at our institute also show that the people from, like those who have been working, they are trying to go for civil services. Lot number of people from armed forces after their retirement, they also appear for it. So before starting the preparation, you have to first understand the scenario. Civil services preparation is not that you come study at your own pace. Here you are going to study not for any degree. You are going to study for a specific purpose. And the specific purpose is to beat the competition. Means with every new batch, the competition is going to increase more. And as you have seen in the changing trend of the exam also, the questions are becoming tougher. The questions give lot of surprise. And the rule of the game at present is adaptability. Are you open to adapt, and are you sensible enough to sense the tea leaves, means the changes? Are you ahead of time, or you are just responding? That will make a big difference. Selection at this point is definitely going to tougher from all perspectives. Even if you see the quality of the question papers in general studies, the quality of questions in essay, everywhere things are becoming more complex and more difficult for the students who may not have that in-depth and sound base. In our vast experience, we have also realized that over a period of time, students' requirements is also changing. Fine. For example, they may require, because somebody is a selected, like in this exam, those who are selected, but they are writing the exam for better ranks. Such students are also there. Then those who are professional and they are leaving very lucrative jobs and coming to this sector, means they understand the stake is very high. So for the new aspirants who may have just passed out from the college or are doing the college, they are facing additional challenge, and they may be require some external measures so that we can bring them at par with others. So that was an idea, and exam has to be taken with a very integrated view, in the sense from prelims, mains, and interview. None of the preparation can be done in a compartmentalized manner and in a silos. Another thing is, this exam requires that you develop thinking capacity, you develop ability to interlink the things, and then writing. Any writing will not help until and unless writing is based on understanding and you write in a manner that appeals. So before you start, it is important that you understand the things, and it's not that business as usual. You should have a strategy,
which should be based on your own strength, weaknesses, and understanding. The decisions that you will take now will shape your future. And we realized that, and especially if I talk about political science as an optional, why it is doing well, because the huge overlap it has with general studies. And today, if you see any of the general studies paper, even if there is a single question, the most challenging paper I believe where students get less marks is paper 3. So even a single question requires lot of multidisciplinary. You will not be able to even identify that this question is from economics or geography or environment or governance. This, so you need a preparation in that way. So that's why we always recommend to go for an integrated approach, and that is why, that was the reason we have taken this building, that students have an option of doing general studies optional, as well as we have the library facility. The mentors are available all the time, so that the entire ecosystem is there, and we are in a position to bring you at the level which is required for the exam. So now, before I start about addressing the political science related things, you may be having this query. So it's rarely happens that our GS teachers are here. So today, Aman Soni sir is here. He teaches economics, and the occasion he is here is that he has written a book uh, on economy, and he wanted that I should release the book. So I thought that this will be the platform. So first of all, I congratulate sir, and as we will be opening this book, he will just interact for 4 5 minutes. You can give your views on economy, and then we will start our session. Okay. So you all understand that things should start, like whether it is political science, whether it is general studies, the first guide is always your syllabus, and the second guide is question analysis. There may be a lot of question analysis available, but still the quality of the answers matter, and even whether it is subjective or objective. So it will make a big difference if any teacher with a huge experience brings this. So we are also very happy and congratulate and for giving me this opportunity to release this book, and to the students who are also watching online. So uh, so this is the book Indian Economy PYQ Analysis for Prelims and Mains. And I am really honored, sir, that you have given me this opportunity. And economics, sir, is known for making the concepts very simple, and economics is one such subject where international relations is primarily economics. We discuss SAFTA, we discuss India's policy on FTA. International relations today, India-US relations, what dominates is trade and tariffs. Fine. So, and another thing is, luckily, because two subjects have a huge overlap. One is economics and another is geography. Fine. So always study things in an integrated manner, and we wish a big sale for your book, sir. Fine. So thank you all of you. So you want to discuss? Yes. Okay. Sir. Yes. Actually, more than the book, I feel honored that the book is being released by Shubhra ma'am. When I was preparing, I used to read ma'am's notes. I never had proper political science classes. I read ma'am's notes, so she's a teacher to me. Yes, I work with her for the last 4 5 years. I'm working here. So the proud moment for me is कि जिनसे पढ़ा वही आज मेरी book release करे, तो I'm really honored. Thank you. Thank you. So the reason for bringing this book,
if you see prelims syllabus of Indian economy, there's hardly anything given. So how would an aspirant know what to read, from where to read, and how much depth is to be read? The primary source for this is PYQs. So PYQs of Indian economy, I have given PYQs of prelims as well as mains. So yes, prelims are available, prelims PYQs are available in the market, they are available from multiple sources. But it has happened that a teacher, actually this is a project of 1.5 years. I started this thing in August 2023 and now it's around March 2025. 1.5 years, I have given around, I would say 3 days to one mains answer. I have given the context of the question, why the context is being asked. It's not that UPSC would ask irrelevant things. UPSC asks just 10 questions from economics in one complete year. So there has to be a reference, there has to be context of everything. Why a specific question is asked. It's given for both prelims as well as main. ये specific question इस साल क्यों आया? वो context दिया. Then I have also given how to handle the question in the prelims exam. कि exam relevant approach क्या? Multiple times it happens we may not be knowing the complete answer, but just by seeing the question, exam relevant approach can help us get over the line. At the same time, I have also given the in detailed analysis of the question. Each and every statement is explained. Why a specific statement is correct, why a specific statement is wrong. And then comes the mains part. Mains answers, it's very easy, I would say, to write an answer of 800 words, 900 words. What I have done is, I have given you a model answer. Model answer of around 1000 words for each and every question. Last 12 years questions, each and every question has been solved. But 1000 words answer is of no use to you. What's important for you is, just before the mains exam, you should be having something which can be read and then you can reproduce in the mains exam. Here comes into picture the handwritten answers. Means for every model answer, I have given handwritten answers, which are in the word limit. All these things are in the word limit. And if you see mains answers, we need to give an argument, and that argument has to be substantiated with facts, with case studies, with examples. All these things are given in the answers. So I would really, it has happened for the first time that a teacher with a vast experience, as ma'am to vast experience, is releasing a book on PYQs. Other things are available in the market, but a teacher bringing PYQs with a good hard work of 1.5 years. You see the book, you can, from tomorrow onward, it will be available in the parking of Shubhra Ranjan IS. You can go through the book, you can have a look at the book, you will really feel the difference in the quality. All right, thank you. Thank you. So don't wait. It's okay. So now regarding political science, so I think the best thing is to address your questions. Do you have any questions in the mind which I should be answering on the subject? What you want to know? Satya sir will explain the syllabus, the course flow, and the other technical aspects. But if you have anything to ask from me specifically, I will be more than happy, because if session is interactive, it is better. Otherwise, I will be discussing the general things which we tell in all workshops. So do you have any questions in mind? Yes. Just a minute, we'll get you the mic. मैम PSIR को हम लोग और सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप जैसे बताते हैं कि ओवरलैपिंग है, तो किस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, उसको यूज कैसे कर सकते हैं एथिक्स में या फिर जीएस में? बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है. इन फैक्ट व्हेन यू विल स्टडी PSIR, जब आप यहाँ पे PSIR पढ़ेंगे और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं वो फिर रियलाइज करते हैं कि पहली चीज है कि पढ़ना किसे कहते हैं, तरीका क्या होता है पढ़ाई का. एंड वेन एवर आई टीच, माई पर्पस इज ऑलवेज टू इम्प्लीमेंट द theories that we study, and most important thing is we emphasize on capacity building. Means, see, when let us talk about PSIR only and then I will address your question. Fine. So if you look at UPSC questions,
Do you think that anybody will mug up and will be able to write? No. So questions are based on understanding. The understanding is based on your capacity. So we will empower you, like our teaching style is to help students in a way that they develop understanding, they develop ability to think, and when they see the question paper, they are able to make sensible answers and make good answers out of it. Okay. Now, political science is known as master science because political science deals with the study of state and governance. And state and governance is at the base of UPSC preparation because you are going to for the purpose of administration. Even in UPSC, if you talk about economics, it is less about microeconomics, it is more about political economy, government of India's economic policy. Fine. So in political science, when you will study political science, you will get a better understanding even of your economics. Which subject is not related to our subject? Hardly there is any subject. Fine. And even if you open up general studies, the paper, GS paper 2, this is actually the foundational paper for your general studies preparation. You see economy, internal security, science and technology, disaster management, etc. are clubbed together in one paper. History, society, world history, geography are clubbed in paper 1. But polity is being given a full-fledged paper. Okay. Now here you have three major areas. Constitutions. Second is governance and social justice, and third is international relations. So when you study for the classes where it is being taught only from the perspective of GS, you get a very superficial understanding where you will have to focus more on memorizing the things rather than developing your own independent ability to analyze the things. So this particular paper, when it will be backed up with the knowledge of your optional, because I always believe that theory is the key. If you know the theory of international relations, you will understand the developments taking place. Otherwise, students hardly understand the organic linking among. Suppose if I talk about evolution of G20, do you find where is the base? How G20 has come into existence? Where is the base? What is the context in which G20 is to be talked about? Is there any theory? Today, every platform, Prime Minister talks about reform to multilateralism. But do we understand the theory behind it and how things move? Once you understand things, how can you explain SARC, the future of SARC, without understanding the theory of the regional integration? Fine. So this particular paper, that is why political science as an optional is not just 500 marks. Fine. You are also covering 250 marks of your GS paper too. And political science students have to do only separately governance portion because that is not directly in the syllabus. Fine. For example, social auditing, RTI, 1 or 2 topics. Otherwise, everything is covered. And the students here, if you see the videos of the students who have got highest marks in political science as well as GS polity, they have applied same approach.
Now, these two papers, another important is the GS paper 4. When you will study political philosophy, you will be able to sail through GS paper 4 very easily. Surprisingly, I have found that even the teachers who are teaching GS4 not having the base in the optional, they are not even having a knowledge of the correct terminology. In the class, students are confused between consequentialism and teleology and many other things. But when you do this subject, then again, other than case study, you don't have to do something separately. And the way we teach this, the focus is always that you will be in a position to tackle almost all questions in large area of syllabus, except very technical, something very technical to geography, something very technical to economics. And another paper where political science students are going to have advantage, another 250, and that is essay paper. You see the trend of writing essay is changing. Fine, they are shifting towards philosophy, and philosophy means you are not just understanding things superficially but understanding the concept, the essence of something. Fine, so directly, and ideally any political science students strategy should also be to maximize the marks here. Again, students need to understand, see, you are studying for 500 marks political science, 250 marks GS paper 2, 250 marks ethics, 250 marks essay. ये तो वैसे ही they belong to one category. Now come to GS paper 1, leave culture part. Political science, you will have to study modern India, national movement, then world history, the type of the, and when I teach political science, I know that the regular general studies classes do not uh, teach GS in an organic manner. It is like completion of syllabus and the topics, but there is lot thing behind. So I ensure that when we do IR, you also understand world history. World history is the base for our Western political thought. Every portion, if a student is good in GS, he will do well in pol science. And if you are good in pol science, you can elevate your marks in general studies. And don't just go that directly a question is not coming from world history, but indirectly world history is the base even to understand the Indian national movement. Are the activities in Indian national movement were happening separately from the World War I or World War II? No. Again, political philosophy like fascism, etc., how they are so much integrated. If you don't understand philosophy of fascism, how will you relate that? Why Gandhi was not so much in favor of Subhash Chandra Bose? What this? So this is an integration. And when you will look at this paper, today you go and analyze, then Indian society, where communalism, regionalism, casteism, empowerment of women, women movements, this all is covered here. Fine. So if not 250, then some 100 plus marks will be covered here. Fine. And now come to GS paper 3. When you will study pol science, you will understand that political economy, we do it, we will give you the theory also. We'll tell you the land reforms, we'll tell you how LPG reforms take place. Next is internal security. Internal security has a huge link with both Indian polity section and international relations section.
And today, when I talk about international relations, two things are dominating. First thing is technology. A student who doesn't have a good idea of nuclear technology, who do not understand why missile defense is needed, who do not have good understanding of the quantum and space and AI, it will be very difficult even to do IR questions. Fine. And the another thing is economy. Fine. So these are some tangible. I can take 80 to 90 marks. So when you do political science, you are actually covering this much marks. Plus enhanced with the way the classes we conduct, because the focus of classes is students should know how to think, and political science is one such subject that will make a tremendous difference in your personality. Fine. And ultimately this exam is a personality exam. When you go to the interview also matters a lot. Fine. So personality, and what is the way to develop your personality? Obviously when you are exposed to the smart ideas, okay, you get to know the things, you evolve as a person. And political science is one such subject where you will be exposed to the smartest of the thinkers, be it Machiavelli, be it Karl Marx, be it Gramsci, as well as the smartest of the brains in terms of strategists and the leaders. And we always emphasize that all of you take a very holistic approach towards the exam, take a very organic approach. The way you have been doing in the past will not work now, and we are very much conscious of this. You will find that even in the batches we keep on upgrading the content, because we don't want there should be repetition, there should be monotony in the content. And if there has to be, why, since I will say 2013-14, Ananya Das and Tina Dabi and all, why there's so much consistency in the result? Because we have understood the nerve of UPSC. It's not just about knowledge, it is also about intelligence. Less to do with information, more to do with knowledge. Less to do with knowledge than intelligence, and intelligence is what I call wisdom. So if you not do the things in an intelligent manner, again UPSC will remain a dream. You have to be very smart, because time is changing very fast and things are becoming very competitive. So you should first analyze what you are going to do, because what I feel is students do not even understand what they are doing, because if you understand, you know what to study and how to study. But when you don't understand and you remain confused, then lot of problems, like a student will come and ask question, do we have to remember articles? Why do you have to remember? There is nothing in UPSC exam that emphasize that you mug up the things. Students will come up with the idea, should we remember the name of scholars? No, scholars are just to substantiate your argument. You write scholars but you don't show your understanding, will it gives marks? First your understanding and then scholars if required. So this is what is called smartness. So I hope you have understood. Where is, so you yourself go and realize and see the trend, whether it is GS, whether it is optional. Questions themselves are becoming multi-dimensional. हर क्वेश्चन में कुछ और होता है, बहुत सारा इंटीग्रेशन. ठीक है, और क्या पूछना है? What else do you want to? Yeah, Mike. Good afternoon, ma'am. First of all, ma'am, I'm in a dilemma. Please, आप थोड़ा loud बोलिए. मैम मैं एक डिलेमा में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ. मैम आफ्टर 12th मैंने ह्यूमैनिटीज सीखी, उसके बाद मैंने ऑनलाइन 12th के बाद मैंने मैम 12th ह्यूमैनिटीज सीखी, उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा SOL है, मतलब डिस्टेंस है. एंड मैम मैंने उसके बाद ऑनलाइन PSIR का परचेज किया एक कोर्स, मे बी इन अदर प्लेटफॉर्म, एंड आई हैव डीपली इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है. बट मैम ग्रेजुअली व्हेन आई राइट द आंसर देयर आर सम कंफ्यूजन्स आर देयर, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स कंफ्यूजिंग करते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट भी आ जाते हैं, जैसे इन
पेपर फर्स्ट ईयर मोस्टली लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, जस्ट लाइक लेटर्स को आ गया। एंड मैम मेरे को अपनी स्ट्रेटजीज एंड वीकनेसेस पता है, मैंने अच्छा खासा लिखा हुआ है, बट मैं वो अंदर से वो आता नहीं। व्हेन यू राइट एन आंसर यू जस्ट इन अ डिलेमा कि ये होना चाहिए, अंदर से वो जस्टिस नहीं आता। एक सब्जेक्ट से तो कुछ जस्टिस हुआ नहीं, ये उससे और भी डीप जानना चाहिए कि इसमें कुछ और भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है, ऐड में कुछ एजिस आ सकता है। मैम उसके लिए मुझे क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि आई डू माई सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को एक इनसफिशिएंट लगता है अपने अंदर से, इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ कहीं सब्जेक्ट में है, कुछ पहली और भी हो बात सकता तो ये है कि आंसर तो इंसान वही लिख सकता है जिसके पास अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके पास जानकारी हो, उससे नहीं लिख पाएगा वो। ठीक है, और अगर जानकारी भी हाफ बेक्ड हो, ठीक है, आप कहीं ओरिजिनल पढ़ रहे हैं और कहीं फोटोकॉपी का फोटोकॉपी पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपने पढ़ ही लिया होगा तो आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया तो पढ़ा ही होगा। क्या है स्टेटमेंट उसका? आइडिया इज जस्ट अबाउट व्हाट इज आइडिया? आपने पढ़ लिया तो हमें जरा बताइए आइडिया क्या होता है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर? कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। With this, political science begins. Political philosophy begins. That's why I am taking one very, and this question can come in essay also. This question can come in ethics also. Do you understand what is this question telling? What is idea? it is just an ultimate aim, ultimate source of reality. This Plato, this is there is a universe, मतलब there is a ऐसे, एक अलग सी दुनिया जहाँ से सब कुछ यहाँ से आता है, जस्ट अ रिफ्लेक्शन, द रियल इज द अबव द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं आपको लगता है आप लिख लेंगे? ठीक है, ये रियलिटी क्या है? रियलिटी इज जस्ट surrounding things which are just a replica of the that ideas. तो रेप्लिका, सो देयर इज एन अल्टीमेट रियलिटी, वर्ड ऑफ आइडिया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडिया? Is every idea idea? Any idea is idea? Any teacher is teacher? No. So there may be some illusions of a teacher. Any knowledge is knowledge. There can be illusion of knowledge. Fine. So एक word of idea है, एक word of reality है। हम इस world में रहते हैं, ठीक है? The world in which we live. It is a word of our experience, sense experience. It is a word of our reason, rationality. So our reality will be shaped by our rationality. How much rational we are. हमारे पास जितनी बुद्धि होगी हमारे अचीवमेंट उतने ही होंगे, ठीक है? यानी rationality will shape the reality. Fine. बट इस स्टेटमेंट का एसेंस क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हम क्या मतलब अगर हम इस आंसर में लिखें तो क्या हम इसे डिस्क्राइब कर देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आइडिया इज सुप्रीम। आइडिया इज सुप्रीम तो स्टेटमेंट है, एसेंस नहीं है। इस स्टेटमेंट का एसेंस ये नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। Why this statement in political philosophy? Everything is said with a purpose, and if you cannot deconstruct the purpose, it means you have not understood it. Knowing things literally and knowing things substantially is a big difference. So what is the essence? If I will ask, suppose you are in interview, there are two candidates. If I ask you, what does this mean? You will say it means reality is a shadow of idea and idea is real. So actually you have not understood anything. But if you know deeper, what should be the right answer of this statement?
क्या है, आपको तो उसकी हवा भी नहीं है, फिर आप कैसे लिखेंगे जब आपके पास समझ ही और अंडरस्टैंडिंग नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन. So the inherent message is that for the rulers, don't go for corruption, don't run after money and power. You are not going to take anything out of this world. ठीक है, तो the message is there is no point doing corruption. ये सब माया है. Reality is a shadow of idea. This is all Maya. Maya is mithya. Fine. And you are working, you are not going to get, you may think you have happiness, but you don't have the real idea of happiness. So where is the real happiness of the ruler? Not in amassing, accumulating wealth, and that too by unfair means. You will never be happy, but a ruler will be happy in serving the people. Now you will get marks not only when you tell what is, but what it means, plus your ability to relate, substantiate. Just like this is developed in Western philosophy, what is the parallel idea in Indian philosophy? ठीक है, so Brahma Satyam Jagat Mithya. What is the essence of it? Don't run after the material world. Do your duty, nourish your soul. So answer you can write only when you understand. That's why I am saying there is a difference between knowing a thing and understanding the thing. Fine. तो ये टोटलिटी में अब जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, until unless your foundation is not sound, you cannot climb higher. Fine. So everyone should try to build a sound foundation. And here, like, you should join institution or not, that is your choice. But what we will do here, what exactly do we do? You will get the sound foundation that will keep you ahead of any other competitor. This much we will assure. Okay. Now what next? Ma'am, doubt is that, ma'am, my senior has told that PSIR is a very dynamic subject as compared to other optionals, and if somebody does not have political science as background in graduation, he cannot survive in the subject. What is that senior doing right now? Ma'am, he is preparing also. Since how long? Since how long? 2 years. He cleared any step? Would you like? Prelims clear. I don't think they are the right person to take advice. Okay. Fine. And we have examples. Rank 2, Anmol Sher Singh Bedi. He got rank 2 in the first attempt. He had no political science background. He was in the running class. Ananya Das, rank 14. 14 या 11 कुछ 16. She had no base in humanities and he got it. So don't take ideas from those who themselves are not successful. Such persons will give only those suggestions. If I am not successful, I would not like other to be successful. Fine. So look for those persons who have been successful. And political science, if somebody says political science is dynamic, you should not see it as a problem, you should see it as an opportunity, because entire UPSC is dynamic. Can you be not dynamic in doing economy, geography, ecology, where is no dynamism? And when political science is your subject, you by default study dynamism. Fine. Now for dynamic part,
Our notes have always been complete and they will always be enough to write, because we also have to keep ourselves dynamic. ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना और कहीं और पढ़ना बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग द वे वी टीच आई कैन से कहीं पॉसिबल ही नहीं है, उस तरीके से सोचना ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन ऑर्डर टू टीच यू हैव टू हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड. आपका अगर कोई एकेडमिक बैकग्राउंड ही नहीं है सब्जेक्ट में तो आप वो समझ नहीं पाएंगे कि चीजें हैं क्या. फाइन, तो मेन चीज है विच ऑप्शनल यू आर टेकिंग, विच एवर ऑप्शनल यू आर टेकिंग. लेकिन इज इट जस्ट यू विल पास एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शनल? ऑप्शनल तो 500 मार्क्स कवर कर रहा है, जीएस उसका डबल कर रहा है, लेकिन क्या जीएस में एक भी दिन ऐसा है जिसमें डायनामिक नहीं है? एक दिन में इतना करंट अफेयर्स इज बीइंग डेवलपिंग. अगर आप पेस नहीं रख पाएंगे करंट से तो वैसे भी आप यूपीएससी कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री ही का एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए, मान लीजिए डेड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं हिस्ट्री में भी. और हिस्ट्री भी फैक्ट नहीं होता है, हिस्ट्री भी बहुत, हिस्ट्री तो उल्टा पढ़ना और मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब पेपर कौन सेट करता है? यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटीज में जैसे साइंस में एक लेवल के बाद सारी चीजें फिलोसफिकली पढ़ाई जाती हैं, वैसे ही ह्यूमैनिटीज में एक लेवल के बाद सब चीजें फिलोसफिकली पढ़ाई जाती हैं. ओके, तो थ्योरी से आपका कोई बचत है नहीं. नेक्स्ट है डायनेमिज्म से बचत नहीं है, और चूंकि पॉलिटिकल साइंस में डायनेमिज्म है इंटरनेशनल रिलेशंस के कारण, तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपकी कोई बचत नहीं है, चाहे आप जीएस पेपर 2 में पढ़ें चाहे कहीं पढ़ें. हमें तो इतना पता है कि हम लोग इतना तैयारी करके आपको दे देंगे कि कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरा बस इतना कहना है, क्लास में आओ एंड हियर इट एंड डोंट लुक एनीथिंग बियॉन्ड नोट्स. डायनेमिक तो होना पड़ेगा, यूपीएससी में ऐसे ही आया है, पहला ऐसे यही है, this word is a word of change or some other statement, you never step in the same water twice. Fine, तो डायनेमिज्म से डरना नहीं. हर फिलॉसफी क्या बताती है, चाहे आप बुद्धा की फिलॉसफी बताएं, चाहे आप कृष्णा की फिलॉसफी ले लें, कौन कह रहा है कुछ स्टैटिक है? कुछ स्टैटिक नहीं है. यू शुड नो हाउ टू स्विम, हाउ टू मैनेज. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्टैटिक है? मोदी जी तो जब से आए तब से डेली बेसिस पे 2-2 पॉलिसी बना देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले परेशान है, पुरानी वाली खत्म नहीं हुई, नई वाली आ गई. ठीक है, तो एंड यूपीएससी इज नॉट अबाउट knowledge. I am saying they don't want professors, they want administrators, they want managers. those management भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेसर और मैनेजर दोनों का रोल कंबाइन करके एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा. मैनेजर इज अगेन वेरी नैरो, लेकिन आपको मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा. आप कोई भी सब्जेक्ट ले, उसका क्राइटेरिया डायनेमिज्म should not be the reason to avoid the subject. Dynamism should be a reason to take the subject. यही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. और आप केवल वो नहीं पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको वो पढ़ना है जिसकी जरूरत है. ठीक है, डायनेमिज्म आपको पहले इंटरेस्ट, मेन क्राइटेरिया क्या है? आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट. जो पढ़ाए उसके ऊपर ट्रस्ट, और सबसे पहली बात खुद पर ट्रस्ट. जब तक खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तब तक इंसान कोई कुछ कर नहीं पाएगा. हर सब्जेक्ट में देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी प्रॉब्लम. नो ग्रेट वर्क इज इजी. रूल तो यही है, कोई बड़ा काम आसान नहीं होता है. और जब आप स्टार्ट करते हैं यू विल बी वेरी मोटिवेटेड, बट वंस यू विल बी इनसाइड द प्रोसेस, मेन चीज तो है ना परसिवरेंस, हाउ टू मेंटेन दैट मोटिवेशन. तो जो ओवरकम कर लेता है, फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी में नीचे
नीत्शे क्या कहता है, यू नीड टू बी उबरमाश. उबरमाश मीन्स ओवरमैन. आप आम आदमी बन के तो यूपीएससी नहीं कर सकते, तो आपके तो यू हैव टू बी सुपरमैन. देखने के लिए 2 हाथ हो लेकिन 50 हाथ हो, तब जाके काम चलेगा. देखने के लिए सबके जैसा दिमाग हो लेकिन जो आइडिया वाला दिमाग है वो एक्स्ट्रा चले. कैसे आप डिफीट करेंगे? लोग 11-12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, फाइनल जाकर के 700, 800, 1000, उसमें भी हाफ रिजर्वेशन. वो पोजीशन समझ रहे हैं. तो विदाउट बीइंग स्मार्ट it's not possible. You should be ready to work and you have to multiply your time and energy and many things. ये मतलब that is why ना UPSC is known as what? Steel frame. So you have to be tough like a steel. You have to be strong. Nothing should be able to challenge your motivation. Nothing should be able to demotivate. Ultimately, it's your personality that has to grow. ओके आप इंटरेस्ट देखिए, ट्रस्ट देखिए और डायनेमिज्म. हमेशा जो इंसान भीड़ से अलग होता है वो हमेशा दूसरे ढंग से सोचता है. कोई कहे डायनेमिज्म प्रॉब्लम है, तुम कहो डायनेमिज्म ही स्ट्रेंथ है. तुम्हारी बात अलग होनी चाहिए, तुम्हारी सोच अलग होनी चाहिए, तब जाकर के आप भीड़ में बैठेंगे या आप वहां बैठेंगे. ठीक है, और क्या जानना है आपको? माइक. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I would like to know your opinion on classroom course versus the online course. Like, if you could Okay, tell in you terms stay in Delhi. If you are staying outside, then you have to see where do you stay actually. I'm from Panipat, so Okay, because besides course, living in Delhi has a cost. Fine. तो जितना कॉस्ट आप 1 या 2 महीने में दिल्ली में रहने का देते हैं उतने में आप 2 कोर्स कर लेते हैं. तो अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है तो क्लासरूम हमेशा बेटर होता है. क्यों बेटर होता है? एकदम टीचर के साथ 1-to-1 आपका कांटेक्ट होता है, इन्वायरमेंट होता है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है दैट कैन बी एड्रेस्ड देन एंड देयर. बट आई डू नॉट नो यू आर इन विच सिचुएशन. कुछ लोग होते हैं उनको हेल्थ इशू होता है, उनको कुछ को खाने का इशू होता है. तो आपका क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके साथ बाकी कंसिडरेशन नहीं है तो ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं. लेकिन अगर हमारा आइडियल सिचुएशन नहीं मिल रहा है तो हमको नेक्स्ट पॉसिबल पे जाना होता है. लेकिन किसी भी सिनेरियो में अगर आपके अंदर वो जिद है कि मुझे करना है तो आप कर लोगे. ठीक है, तो हर चीज का एक सोल्यूशन. अगर आपको लगता है कि टुडे माय फाइनेंसेस डू नॉट अलाउ, माय हेल्थ डू नॉट अलाउ, सम पीपल मे बी वर्किंग, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम फॉर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज में आप आ सकते हैं. तो वो एक हर चीज का एक सोल्यूशन है. लेकिन सारी चीजें आपके साथ आइडियल है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और केवल पढ़ना है और अफोर्डेबल है, तो ऑफलाइन ही करें. लेकिन हमेशा आइडियल के लिए नहीं बैठो, बेस्ट प्रैक्टिकेबल के लिए जाओ. आपकी सीन में बेस्ट प्रैक्टिकेबल क्या है और उस तरीके से चले जाओ. क्योंकि पढ़ाई के साथ एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे लाइब्रेरी है, मेंटोरशिप है, तुरंत चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं. फाइन, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक रियल वर्ल्ड है, उसमें डिफरेंस तो होगा ही. लेकिन अगर अवॉइडेबल नहीं है तो फिर हमें हमारे पास जो है वी शुड थिंक कि यही बेस्ट है. अगर हम करना चाहते हैं ऑफलाइन लेकिन हम एज अ कॉम्प्रोमाइज ऑनलाइन ले रहे हैं तो वी शुड फॉरगेट इट एज अ कॉम्प्रोमाइज एंड वी शुड टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. ठीक है, तो आप अपनी सिनेरियो देखिए, फर्स्ट चॉइस ऑफलाइन रखिए. कंसिस्टेंसी, क्योंकि वीडियोस चीजें बहुत डेंस हैं, बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन देखना वेखना भी बहुत सेल्फ डिसिप्लिन वालों का काम है ये. जैसे जो लोग जॉब वॉब में रहते हैं उनके लिए रहता है. अब उनके स्टेक्स बहुत हाई है ना कि इतना जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो उनको
करना ही होता है। एज वाइज भी बहुत फर्क पड़ता है, मैच्योरिटी का और बहुत चीजों का। हर चीज का अपना कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। जैसे आपकी एज ज्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन आपकी रैशनैलिटी ज्यादा है। आप यंग हैं तो आपका एंथुजियाज्म ज्यादा है। तो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के अनुसार वी हैव टू मेक द स्ट्रेटजी। व्हाट एल्स? गुड आफ्टरनून मैम। बी लाउडर और पानी पीना। मुझे ये जानना है कि क्लास का फ्लो कैसा रहेगा। आई मीन कि जीएस और अगर पीएसआईआर को हम एक साथ स्टडी करने के लिए बैठें तो हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम दोनों को साथ साथ लेके चलें। अब जैसे मैम देखिए, दोनों का साथ साथ तो तब चलेगा जब आप एक ही इंस्टीट्यूट में कर रहे होंगे। जब आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में कर रहे होंगे तो दोनों का कोई फ्लो बने ना बने ये तो नहीं पता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, पहली चीज है बैच टाइमिंग ऐसा हो जो बैक टू बैक, जिससे एक ही टाइम में क्लासेस खत्म हो जाएं और आपके पास स्टडी टाइम काफी हो। नेक्स्ट ये है कि पढ़ाई का फ्लो, पढ़ाई में हमेशा थ्योरी पहले पढ़नी चाहिए। जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो करंट को समझने के लिए आप इक्विप्ड हो जाते हैं। तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। अगर बाकी जगह आप जनरल स्टडीज देखिए तो किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, क्या वो नहीं, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रीमलाइन करते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। मैं इस बात से नहीं मानती कि जीएस पेपर 4 जो है वो लास्ट में पढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाने वाले टीचर को होना चाहिए कि वो कैसे पढ़ा रहा है। ये तो टीचर का फेलियर है अगर वो समझा ना पाए जीएस 4 और सोचे कि जब सब आधे बच्चे ही बचे तब पढ़ाओ जीएस 4। ठीक है, तो वेस्टर्न थॉट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री। जब आप रेनेसांस पढ़ेंगे, वेस्टर्न थॉट है क्या? इट इज अ हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, and history and actual philosophy is interlinked because ideas shape the history. हिस्ट्री कैसे बनती है? आइडियाज से बनती है। तो दो चीजें, आप पहले मेंस स्पेसिफिक एरियाज खत्म कर लें, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आप खत्म करें, उससे पॉल साइंस में फायदा होगा। सेकंड है नेशनल मूवमेंट खत्म करें। नेशनल मूवमेंट बेस है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का। अनदर थिंग इज इन आप एथिक्स को करें, सोशल इश्यूज, कई चीजें तो साथ ही में कवर हो जाएंगी। तो वो डिपेंड करता है आप कब कहाँ और कैसे क्लास को कर रहे हैं। एक जगह करने से फायदा होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस करने होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना कहीं क्लास 9 बजे चालू हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में 10 बजे चालू हो रहा है और आने जाने का टाइम और कोऑर्डिनेशन ये सब एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके अनुसार आप डिसाइड करें। क्लास नहीं मैम, अगर मुझे जीएस की सेल्फ स्टडी करनी है तो जीएस की सेल्फ स्टडी करनी है तो जैसे पॉलिटिकल साइंस हो रहा है तो आप एथिक्स खत्म कर लें, लेकिन वही मैंने बताया उसमें पहले वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर लें। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स होगा तो अपना जीएस 2 खत्म कर लें। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करने में सोशल इश्यूज भी आप कवर कर सकते हैं, तो उसी के पैरेलल आप खत्म करते जाएं। या आप एक ऐसा अप्रोच कर सकते हैं कि जीएस के 4 पिलर्स खत्म कर लें, भाई पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। यहाँ पे अगर हम करेंगे हम तो वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से कर रहे हैं तो आप जीएस 2 से पढ़ें, क्योंकि जीएस 2 बेस बनता है फिर जीएस 4। नेक्स्ट। Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is that we have to take a separate class for IR or will it be incorporated with PSIR? सेपरेट क्लास फॉर आईआर जीएस नहीं, जीएस और जीएस पैरेलल चलता है और पॉलिटिकल साइंस अपना अलग चलता है। So we have to take separate class for IR also?
नहीं, पॉल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए ही नहीं, आप स्किप कर दीजिए, अगर होता भी है तो स्किप कर दीजिए, ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है। And we, ma'am, will you take all the classes for PSIR? No, some portions Satya sir will take Indian section, I will be taking theory section and 90% of international relations. Satya sir will be taking Indian government and politics, he will tell the breakup. And my last question is, means, ma'am, we have to, means what we have to write for the GS paper answer writing, and what we have to write in It is PSIR same. optional. Questions just like rivers don't know boundaries, so knowledge doesn't know boundaries. There is a question and there is an answer. Don't have this mindset that you have to do something different. In UPSC exam, if you see a question and if you know it, that itself is an achievement. So where is that ideal scenario where you will sit and think? I always tell my students to study in an organic manner and see the question, forget the subject. All subjects are interlinked. Fine. You can't write a different answer on Indian Ocean in IR and Indian Ocean in geography. It is all interlinked. Okay. Next. Good afternoon, ma'am. Yeah. Ma'am, I'm currently in my first year of college. I'm pursuing graduation in political science only. But my question is that I haven't been able to start with the GS properly yet because I'm new to the competition and I've only yet started figuring out about the coachings and syllabus and stuff. So, will it be ideal for me? I wanted to get done with my optional and mains portion first, and then pick on my with my prelims preparation. So, will it be ideal for me to start with my PSIR portion and then I switch You to? can do. आपको कब दोनों ही चीजें करनी है। आप मेरे I always believe कि अपना कन्वीनियंस देखना चाहिए, ठीक है। तो आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको पिकअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और जब आप यहाँ से करेंगे पॉलिटिकल साइंस तो अगर आप एमए का CUET ये सब भी करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, उल्टा आपके यूनिवर्सिटी में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो दो, और अगर आप जीएस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी का कोर्स करें पहले, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो और जो ज्योग्राफी है सब हमारे यहाँ जो रेगुलर फैकल्टी है वो ही पढ़ाते हैं। मैंने अभी एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाई और स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ कि अगर वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो वो एथिक्स नहीं समझ पाएंगे कभी, ठीक है। तो आपके लेवल पे आप ऑप्शनल कर सकते हैं, ऑप्शनल करके खत्म कर सकते हैं। वो ऑप्शनल आपको पूरा बीए ऑनर्स में बहुत ज़्यादा मदद कर देगा, सीयूईटी में भी मदद कर देगा और आपकी लेवल ऐसा आ जाएगा कि आप फ्री माइंड से होके जीएस कर सकते हैं और ऑप्शनल में टेस्ट सीरीज के साथ फिर अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। कुल मिला के टाइम इज वेरी वैल्यूएबल and we should use our time very cautiously. टाइम नहीं वेस्ट करो, तो बाकी समझने समझाने में कोई देयर विल बी नो प्रॉब्लम। Okay, ma'am. Thank you. और अगर हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेते हैं तब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है। हमेशा आप जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश किया करें, अदरवाइज यू विल नॉट डेवलप। Good afternoon, ma'am. I am first year student of BA program History plus Political Science. So, ma'am, it's been a long time that I have read NCRT. So, my doubt is that like I should start without reading NCRT with the upcoming 7th April batch. देखिए आप जैसे मतलब पॉल साइंस के लिए पूछ रहे हैं या जीएस के लिए? हाँ जी मैम, my doubt is like should I start with optional PSIR or with GS? किस ईयर में हैं आप? मैम आई एम इन फर्स्ट ईयर एंड आई विल बी गिविंग माय फर्स्ट आप एसओएल में हैं? नो मैम, आई एम इन रेगुलर। रेगुलर किस कॉलेज में? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में। फिर आपको पढ़ाई का कितना टाइम मिलता है? लाइक मैम आई कैन गिव माय मोर डेडिकेटेड टाइम टू यूपीएससी ओनली इंस्टेड ऑफ फॉर स्टडीइंग फॉर आप जीएस की जो तैयारी है आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें।
और मैं तो कहती हूँ कि जो जीएस है उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा। कुछ एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कई एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी वाली जो है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, एक। और दूसरी चीज है, टाइम विल फ्लाई लाइक एनीथिंग, ठीक है। आज ऐसे लगता है हम फर्स्ट ईयर में, फिर पता भी नहीं चलेगा कब फाइनल ईयर खत्म हो जाता है। तो आपके पास ये है कि अभी हम क्या करें और तब क्या करें। आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां से जब आप पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो आपके कॉलेज के भी ग्रेड्स काफी बेहतर हो जाएंगे। CUET PG ये सारा जो चीजें हैं उसमें भी आपकी स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। और पढ़ाई आप खुद रियलाइज करेंगे कि हमारा लेवल बेटर हो गया। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप जीएस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनसीईआरटी कोर्स जो यहाँ पे उसकी कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि भी वांट एक तरीके का जीएस और ऑप्शनल का वो इमर्शन प्रोग्राम टाइप होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मतलब टाइम देखिए आपके पास जो एक लेजर या एक्स्ट्रा टाइम है कितना, ठीक है। और इसीलिए शुरुआत में मैं कहती हूँ कि सारे लोग कंफर्ट से जाओ, क्योंकि अगर हम बहुत एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं तो एक बार मोटिवेशन चला गया तो दिक्कत होती है। तो इंश्योर करो कि इतना बर्डन लो जितना आप संभाल पाए टू बिगिन विथ, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। लेकिन ये भी है कि टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग। आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक से। और ऑप्शनल मतलब मैनेज आप कितना वेट ले सकते हो तो आपके ऊपर है। और पढ़ाई से नुकसान कभी नहीं होता है, फायदा ही होता है। टाइम का यूटिलाइजेशन पढ़ के किया तो अच्छी ही चीज है। चाहे तो आप दोनों कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, तो आपका डिसीजन है। हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। फायदा ये है कि ऐसे मैंने बताया, मतलब आपका जो कॉलेज में सिलेबस सेम ही होता है ना, ये उससे आपको बहुत फायदा होगा। नुकसान ये हो सकता है कि आप ओवरबर्डन थोड़ा फील करने लग जाए। एनसीईआरटी थोड़ा सा लाइट पड़ेगा आपको, आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करें। एनसीईआरटी को कभी लाइटली ही मत लो, बहुत अच्छा है और जीएस के लिए वो बेस है, ठीक है। बाकी आप डिसाइड Like करेंगे। ma'am, I am thinking my first attempt is in 2028. So अभी मैं ऑप्शन का start कर सकता हूँ. Like it will end in आप कर सकते हैं, जो बीयू में बीए कर रहा है तो पॉल साइंस समझने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। वो तो समझिए सोने में सुहागा है, इन द सेंस आपके अपने आप ऑप्शनल क्लास में ही मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब हमारा अचीवमेंट होने लगता है, जब हमें एक जगह सक्सेस मिलती है तो हमको कहीं और भी करने को मोटिवेशन मिलता है। तो चीजों के साइकोलॉजिकल और सब एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलिए, आप कर सकते हैं आसानी से। हमेशा जैसे जब मन आए करूं या ना करूं, तो हमेशा करो, बिकॉज एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन इनएक्शन। गीता में ही लिखा हुआ है कि एक्शन और इनएक्शन में चॉइस हो तो हमेशा एक्शन की ओर जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और दूसरा मेरा खुद का लाइफ का सिद्धांत है, बिटवीन अ सिंपल एंड डिफिकल्ट ऑलवेज चूज the difficult things, because valuable things will not come through the simple route. Anything valuable can't be simple, fine. And between action and inaction, action is always there. और कुछ? Jai Hind, ma'am. Ma'am, Yeah. which newspaper should we read? Pardon? Which newspaper should we read? The Hindu. The Hindu, not for pol science as such, but for GS. Because Indian Express is too much, too academic. They are doing excess of something which is not. You have a question? माइक लेके कहाँ चले गए? Good afternoon, ma'am.
My question is that what you expect from a student, though from a student who have not PSI background, and Nothing. Just a right mindset, a willingness to learn, and the second thing is person should be able to sustain the motivation. And before coming to the class, if you want to read world history, or if you want, you can have a immersion program in the form of NCR. I don't leave anything on students. We'll start because I know there are big loopholes in the knowledge. So those who do graduation in the subject, they also don't. They are the bigger. They have bigger issues because they are so much confused. Nothing is required. All depends how much you want to go for civil services and how much you want to give for that. apart from NCRT, what will be the नहीं, हमारे क्लास में कोई पढ़ के नहीं आता है, लेकिन समझदार होके निकल, ठीक है। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं पढ़ना है तो भी मत पढ़ें, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट ही ह्यूमैनिटीज है, थोड़ा आपको ह्यूमैनिटीज के माइंडसेट में आपको ढालना पड़ेगा। थोड़ा आप पॉलिटिशियंस सब लोग कैसे बातें करते हैं वो थोड़ा ऑब्जर्व करिए। तो जो पॉलिटिकल वर्ड है उसी को लिख दिया गया है, उसी की थ्योरी को समझना है। तो अभी आपने जीएस कुछ किया है? स्टार्ट हुआ अभी 27 अटेम्प्ट। हाँ, तो ठीक है, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ? यस, इनको माइक दे दीजिए। Good afternoon. Currently, I am pursuing my master's from JNU first year. I have a question that I have obligation to attend class in my college. So I have also an obligation to attend your class, ma'am, online basis. हाँ, तो ऑनलाइन करें। Ma'am, I have doubt about query resolution. क्या? Query resolution. क्या कह रहे हैं? I have a doubt about query resolution. क्या क्वेरी? हाँ मैम, क्वेरी कैसे सॉल्व होती है? हाँ, नहीं मैम, वाइल प्रिपरेशन अगर कोई भी क्वेरी अगर आई है तो मैम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं आपको, या ऑनलाइन करना है? दो चीजें हैं। आप अगर जेएनयू में हैं और वहां से रोज रोज आना होगा तो आप टैबलेट कोर्स है ना ऑनलाइन वाला लिए। दूसरी चीज है क्लास लेक्चर के बाद मेरे क्लास में बाकी मेंटर्स डाउट लेते हैं, बाकी जो सत्या सर ये लोग अपने डाउट खुद ही लेते हैं। नेक्स्ट है बीच बीच में हम भी डाउट सेशन लेते हैं, और आई एम मोस्ट एक्सेसिबल टीचर। मैं तो यहीं पे रहती हूँ, बच्चे आते रहते हैं, तो आप किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, वो इशू नहीं है। आप you. कभी भी, आई एम वेरी एक्सेसिबल, नॉट ओनली मी, सारे टीचर्स यहाँ पर रहते हैं, एक्सेसिबल है, आप आराम से आ सकते हैं। जो जैसे गैप्स में आ सकते हैं, 4:30, 5, 6 बजे तक तो मैं रहती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, तो मेरे से और कोई डाउट तो बचा नहीं? ठीक है, सत्या यू कैन एक्सप्लेन। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होपिंग टू सी यू इन द क्लास। ओके, थैंक यू। So I think most of the doubts has been addressed, right? The batch details, as you know, that it is starting from 7th of April. Okay, the timing is 2 p.m. to 4:30 p.m. Right? It is available in both the modes. If you want to come to attend the class here, and as you said that you are in JNU, right? Or anybody who is having some kind of academic commitment or some job commitment, you are asking about online versus offline, right? Again, ma'am told you about her perception. I believe that both are equal. In fact, if you go for the tablet mode, it saves a lot of your time. For example, if you have to come from JNU, even if you can manage, but at least I think it will take 1 hour to reach here, isn't it?
and 1 hour to go, and there will be some kind of some margin you will take. So clearly you are losing some 2.5 hours, which is a very substantial time given the fact that you have academics also, and that also in GNU we know that it's quite challenging. So in that case, I would recommend that you can go for GNU for the tablet course. As far as the question of the doubt redressal is concerned, so in a week we will have 4 classes of MAM and 2 classes of mine. So MAM will start with the Western political thought, and I'll be starting with the IGP topics. Okay. So after the second class, I'll be taking the doubt session of my section. MAM section, MAM will take one doubt session in a week, or there are PSIR mentors who will take the doubt session of MAM's class. Okay. Somebody was asking about the dynamic nature of the subject. As MAM rightly said, that you cannot escape that dynamism. And that also in pol science is not as dynamic as you perceive. It's a very big myth. The relation between two countries, they don't change in 1 year, 2 years, right? What has happened between India and China for last 4 or 5 years? It has remained the same. So we'll always study the international relation in phases, not in 1-2 years. Rather, if you talk about India, China, then 1947 to 62, 62 to 1987, when Rajiv Gandhi is visiting, 87 to 2014 and onwards. So it's not that we are supposed to write ball by ball commentary in the answers. So it's not that dynamic. If you want to convince yourself, go through the PYQs, the syllabus which has been given. It is just the indication that what all UPSC wants you to study. But when you go through the PYQs, you will know that what UPSC is asking. And that is in fact the best part of the optional, any optional, particularly pol science, is that PYQ repeats. Okay, PYQs are repeating themselves. And if you solve them, there are higher chances that you will get a question which you have already attempted. Just to give you an example, this year from my section, there's a topic, if you in the syllabus, salient features of Indian Constitution, right? From that topic, 50-mark question was asked this year. Okay. Now, in that 50-mark question, a 20-marker was about FR versus DPSP. Very, very recurrent theme in GS also, here also. Another 10-marker was about constitutional morality, already asked in GS also in pol science. Another 10-marker was on objective resolution, basically preamble. And another 10-marker was on the legal remedies, basically Article 32 that we all read. None of the question was a new question. So in PSIR, whenever you start studying, somebody was saying that 2028 may attempt it, right? So whenever you start, the idea is that after 1 month or 1.5 months, be thorough through the answer writing also. Because jitna bhi aap karenge na, doing classes, online, offline, reading books, reading notes, you're doing all that for addressing those 5 questions one day. If in this session, by any means, I tell you कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या जरूरी है किताब पढ़ना, क्या जरूरी है कोई भी कोर्स ज्वाइन करना? But since that is not possible, so we will start finding the trend of the UPSC, and the trend is revolving around. Convince yourself, go through the PYQs. In fact, IR में जो कहा जाता है super dynamics, not dynamic. In fact, on the topic of UNSC, there is only one question which is asked: should India be given seat in the United Nations Security Council? Just one question, 7 to 8 times. Just one question. They have not even changed the language substantially. This is the same one. Tomorrow, if India gets a seat in UNSC, then they will be ending up with the question itself. So you have to take the benefit. See, there are two kind of students that come to us. एक idealist approach अपनाते हैं, जो कि होना चाहिए. That is ought to be. जो प्लेटो में आप पढ़ते. The others are very practical. They know that if you start studying all the topics with the same diligence and all, then UPSC syllabus is so huge. और optional में भी जो PSIR optional है ना, it has all the benefits except one, that the syllabus is quite huge. And that also the way in which we will teach you, that also is quite comprehensive. And why we are doing so? Because ठीक है थोड़ा ज़्यादा time लगेगा, but at the end of the day, the complete course is happening. क्योंकि आप बार बार फाउंडेशन कोर्स नहीं करेंगे ना,
Maybe if you have to go for the second attempt, you will take the next test series. But it's not that you're going to do the foundation course again. And just look at this syllabus. It's a huge syllabus. And this is the only challenge in pol science. Otherwise, as ma'am was explaining, overlap. Essay, GS1, national movement, post-independence, world history, GS2 except the governance parts, GS3 minor, GS4 major one. So उसमें थोड़ा focus होके PYQ से चलना है. We'll start the class on 7th of April. 4+2 combination. There can be some changes. Someday it can be 3+4 also. Keep that time slot of 2 p.m. free even on the 7th day, because towards the end of the syllabus we may require to do the 7 days classes also, right? Stream मैंने बता दिया. One section of IGP, another of the Western political thought will start. By the end of the course, we can assure you that the notes will be comprehensive, but we can assure that nothing is going to come outside the notes. The questions which have been asked, especially after 2013 when the pattern changed, is that the questions are coming from the notes itself, right? So you have to be with us through this process, and I think that should be sufficient. Anything that you want to know on the part of the course structure? Yes? Chalo, thank you so much. Sorry? 9 months we are aspiring. अब 9 months का ये मतलब है नहीं कि 9 months एक दिन हुआ तो अगले दिन तुम नहीं आओ, right? See, the thing is मान के चलो 10 months, 9 months we are aspiring to complete. But if it is taking 10 months also, तो तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो टीचर भी खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तो टाइम हमारा भी जा रहा है. बट यदि टाइम रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने के लिए यदि हमने आधा अधूरा पढ़ाया तो फिर रिजल्ट्स नीचे जाएंगे. ओके, somehow you'll find that this year 113 selections were there, all sides. तो यदि उसको if time becomes a factor at the back of the mind, वो कोर्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है. इट इज 9 months, हो सकता है कि उसमें 15 दिन पहले भी हो जाए. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. क्या नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलते हैं या फिर मतलब रिटन नहीं मिलते हैं? नहीं, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो पूरे सिलेबस में शायद 3-4 या फिर 5-6 पीडीएफ ही होंगे जो आपको दिए जाएंगे. Otherwise, notes are dictated in the class. Okay, we have tried giving notes in the print, but most of the students they say no, because when you write the notes in your copy, it fits into muscle memory. और जब आप उसको रेफर करते हैं ना, जब रिवाइज करते हैं तो आपको क्लास का पूरा कॉन्टेक्स्ट याद आ जाता है. So therefore, we have tried that also, but students, we tried that because of for the ease of the student, but the students have preferred the handwritten notes only. तो handwritten notes ही आप करें. सर एक डाउट और था, बट वो स्ट्रेटजी रिलेटेड है. लाइक मेरी जीएस की कोचिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है इस मंथ, और 7 अप्रैल से लाइक बैच ज्वाइन मैं करूंगा. तो उस टाइम पे मैं एक चीज मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कैसे करूं. जो जीएस के पार्ट्स खत्म हो चुके हैं और ऑप्शनल के साथ में चलेंगे, तो उनको रिवाइज करना और उनसे नोट्स बनाना वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है. जो स्ट्रैटेजी है ना, चाहे पॉल साइंस हो या जीएस, एक टॉपिक को पढ़ने का आपको 3 मौका मिलता है. द एंटायर साइकिल. कब एग्जाम दे रहे हैं आप? सर 26 में दे रहे हैं. तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का आपको 3 ही मौका मिलेगा. फर्स्ट, व्हेन दैट टॉपिक इज गोइंग ऑन इन क्लास. जैसे पॉल साइंस का ही लेके चलते, प्लेटो पढ़ाया जा रहा है, आपको मौका मिला है, प्लेटो आप पढ़ रहे हैं. सेकेंड इंस्टेंस, यू विल गेट द चांस टू रीड द टॉपिक प्लेटो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द टेस्ट ऑफ दैट टॉपिक. बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि करंट की क्लासेस आप पढ़ते रहेंगे. And the third and the final time would be when you are going to write the exam. बीच बीच में एक दो पढ़ लिए वो अलग बात है, but these are the major instances when you are getting time to learn the subject. Now out of the 3, यहाँ पे जब आपको पढ़ाया जा रहा है, you are short on time, क्योंकि क्लास कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टेंस आप पढ़े, मे बी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है. When you are going to give the exam, बहुत टाइम कम है. Just giving you data. This year mains is in August last May. Prelims और mains के बीच में करीब 86 days का टाइम मिल रहा है. दिवाली, दशहरा, फेस्टिवल, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा. So it boils down to 70 days. 70 days में आपको कितने पेपर्स पढ़ने हैं? 9 पेपर्स टोटल है, लेकिन क्वालिफाइंग को हटा दिया, 7 पेपर्स पढ़ने. That means 10 days per paper, not per subject, per paper. यानी मैं पेपर 1 कहूँ जीएस का, तो हिस्ट्री ऑफ ऑल काइंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, सोसाइटी,
Similarly, paper 3 कहूँ तो entire thing. तो do you think that 10 days are sufficient? No, it is not even sufficient. यदि मैं आपको टाइम दूं तो 10 दिन केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने में आपका निकल जाए, isn't it? और सोचिए 10 दिन में आपको पूरा पेपर 1 पढ़ना है, ये जो सिलेबस दिया हुआ है पूरा पेपर 1 10 दिन में पढ़ना है. इट मीन्स, और ये जो टॉपिक्स हैं आपके पास 10 + 10 20 टॉपिक्स, इट मीन्स यू विल गेट हाफ डे टू स्टडी एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मार्क्स, मिल, सब कुछ आधा दिन मिल रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा. That means the only time that you are getting to consolidate on the subject is when you are writing test. अब आप जीएस में इस स्टेज पे आ चुके हैं, आपका क्लास वाला टाइम फिनिश हो गया है. Now since you asked the question, that's why I'm bringing it. Now the only way to revise it and write it is through test. Target year 26 है, I would suggest join a test series और आप every 15th day एक टेस्ट को शेड्यूल करें. And make sure that let us say today is what 18th of March. मेरा अगला टेस्ट जो है वो 15th of April को है, and that test is of history. Now for me for the next 18 days, GS का मतलब history है. I'm not concerned about anything else. और ऐसे कर करके पूरे साल में वो फिनिश हो जाए. And remember that this is the only time that you are getting. उसके बाद आप एग्जाम में ही हिस्ट्री के दर्शन होने वाले. So for GS I would say that practice through writing test. और why it is important, क्योंकि ये जितना आप तैयारी कर रहे हैं it is going to be decided. The only one thing which decides your selection rejection is the answer writing skill. कितने मार्क्स का पेपर है ये पूरा एग्जाम? 2025. 275 कहाँ से आ रहे हैं? इंटरव्यू. 1750 कहाँ से आ रहे हैं? मेंस. और मेंस में तो सामने वालों को नहीं पता ना कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं कि बबलू यूनिवर्सिटी से. वो तो बस आपका आंसर जा रहा है उसके सामने. सो देयर इज नो चांस ऑफ बायसनेस और फेवर. इंटरव्यू में बायसनेस हो सकता है. इफ यू आर फ्रॉम माय कम्युनिटी आई मे हैव बायस. इफ यू आर नॉट फ्रॉम माय कम्युनिटी हो सकता है कि मैं आपको कुछ कम मार्क्स दूं. बट दिस स्टेज ऑफ द एग्जाम इज अ प्योर टेस्ट ऑफ मेरिट. टेस्ट मैच होता है ना, जैसे 9 पेपर्स. प्रीलिम्स भी काफी लक बेस्ड है, 2 घंटे का पेपर है, बट लास्ट के 15 मिनट में डिसाइड हो रहा है कि आप इन है कि आउट, क्योंकि आपने 15 क्वेश्चन मार्क किए होंगे जिसपे आपको डाउट है, और उसको आप जब फाइनल भरते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर होता है एंड यू इन और आउट. इंटरव्यू इज कंप्लीटली लक बेस्ड, कंप्लीटली लक. यानी इफ द हार्ड वर्क मैटर्स एट एनी स्टेज सब्सटैंशियली इट इज द मेन स्टेज. और मेन स्टेज है क्या? 9 hours, 9 papers into 3, 27 hours of answer writing. That's it. तो अल्टीमेट फोकस जो है ना आपका, इट इज ऑन आंसर राइटिंग. चाहे आपको दुनिया भर का ज्ञान हो, लेकिन उस दिन आप आंसर नहीं लिख पाए, यू आर आउट ऑफ द लिस्ट. सो फॉर जीएस आई वुड सजेस्ट रिलाई ऑन दिस. पॉल साइंस के लिए आपके लिए ये स्टेज आएगा करीब 2-3 महीने बाद. मे बी जुलाई ऑनवर्ड्स यू विल बी इन अ पोजिशन व्हेन यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर. ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ. No, in this Pol Science course, it is a foundational course. In this test series is not included. It is just the lectures and doubts. Tests are separate. In this course, जो 7 अप्रैल से start हो रहा है, it is just the lectures. It is not having tests. Test series is a separate program. वो अभी आपको join नहीं करना है. That वो जुलाई में आप चाहें तो join कर सकते हैं. But in this test is not included. हाँ, वो जुलाई में है, later part of it. सर लाइक इस तरीके से जैसे मैंने आपने बताया अभी, कुछ सब्जेक्ट को खुद से करने की कोशिश करी थी पिछले 2 महीने में, हुए भी, बट फिर एक टाइम के बाद जैसे अगर मैंने एक टेस्ट दे दिया तो फिर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं उस सब्जेक्ट को भूल जाऊंगा, और भूल ही जाता हूँ. मतलब करता हूँ, कम टाइम लगता है. नेशनल एंथम याद है आपको? यस सर. नेशनल एंथम याद है? नेशनल एंथम जन गण मन. यस सर, यस सर. कभी उसको बैठ के रटा है क्या? नहीं. उसका मतलब पूरा जानते हैं 100%? लगभग ना 100% तो नहीं जानते. नो. लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट नेशनल एंथम, पूरा लिख देंगे आप. जन गण मन. सामने वाले को तो पता नहीं कि आपने समझ के लिखा है कि रट के लिखा. सी व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस एग्जांपल कि प्रैक्टिस. दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. देयर वाज वन रैंक 33 गंगा सिंह, हिंदी मीडियम स्टूडेंट. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही गेव, ही कुड नॉट कंप्लीट द पेपर छूट गया. नेक्स्ट अटेम्प्ट ही यूज्ड टू राइट 3 टेस्ट इन वन डे. 3 टेस्ट इन वन डे का मतलब 9 घंटे एक दिन में लिख रहा.
एज ए रिजल्ट जब एक्चुअल एग्जाम देने गया तो हर एक पेपर में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बच जा रहे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जो आप बता रहे हैं ना कि जैसे आपने रिवाइज किया, लिखा, भूल गए, इट्स नॉट दैट यू आर कंप्लीटली फॉरगेट, जस्ट दैट कि वो सबकॉन्शियस माइंड में है, एक बार रिवाइज करेंगे वो आ जाएगा वापस। एंड विथ टाइम, विथ मोर द रिविजन इन दिस एग्जाम, व्हाट हेल्प्स द मोस्ट इज रिविजन एंड द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बस उसमें मदद करता है। तो 100% तो हमेशा याद नहीं रहेगा, रिविजन इज इंपॉर्टेंट। सर इसमें जैसे टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने 20 बार पढ़ लिया, 25 बार पढ़ अब ये लिया। कोई नंबर फिक्स करना जरूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज अब कोई 20 बार पढ़ रहा है, हो सकता है कि उनकी स्पीड वैसी रही होगी, लेकिन ऐसे 20 बार तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ ले, ठीक है। इट सी द थिंग इज यू हैव टू डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंग टू मी, 40% टाइम टू पॉल साइंस, 60% टाइम टू जीएस। उसमें जितना हो पा रहा है, उसमें 20 बार हो रहा है, 50 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है। अब आप 20 बार कंप्लीट करने के लिए ना, अभी क्या है कि एक थोड़ा बहुत ही क्रेजी सा चीज चल रहा है यूपीएससी में, वेर इन सम मेंटर्स विल गिव यू इतने पेजेस आप पढ़ के आओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दैट काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कि कोई आपको ये बताए कि सुबह में इस पेज से इस पेज तक पढ़ के आओ, ठीक है। आप 5th का एग्जाम तो दे नहीं रहे, 6th का एग्जाम तो दे नहीं रहे, यू आर एस्पायरिंग टू जॉइन ब्यूरोक्रेसी एंड द लोएस्ट लेवल यू विल बी स्टार्टिंग विल बी द एसडीएम लेवल। फिर आप किसी से कहाँ पूछने जाएंगे कि आज क्या काम है। सो द ओनली थिंग इज कि आप एक प्लान बना लें कि इन 1 month आई विल गिव 3 टेस्ट्स, और फिर आप डिसाइड करें। नंबर ऑफ रिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी। हो सकता है बहुत कोई इंटेलिजेंट है, वो 20 रिवीजन कर लेता हो, जो नहीं कर पा रहे। सो डोंट पुट दैट नंबर, द ओनली थिंग इज इन दैट लिमिटेड टाइम जो आपने डेडिकेट किया है, गिव योर 100%। इतना ज्यादा स्ट्रक्चर में फिक्स करोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। इसमें एक दिन की तो बात नहीं है ना, यू आर गिविंग द अटेम्प्ट ऑफ 26, बेस्ट केस में रिजल्ट में 27 में आएगा, दैट इज स्टिल 2 years। अब इतना स्ट्रक्चर में ढाल के पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? 48 hours, it will be for 48 hours after the class for 2 days. Recordings are available in the tablet for 2 days. उसके बाद भी छूट जाता है, then there are 20 exceptional lectures that you can watch, ठीक है, 20 exceptional lectures। उसके बाद भी नहीं होता है, you can come to the premise, we will show you the lectures at our in our library। वहां पे tablets रखे हुए, आपको जो देखना है आप देख सकते, ठीक है। उस टाइम में लेक्चर्स टैबलेट में ही जाएगा। व्हाई विल यू टेक द टैबलेट सेपरेटली? हाँ, वो देख सकते हैं, ठीक है, श्योर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच।